Hi, hello, hello, hello. Welcome back to my YouTube channel. I am Chidanand, a final year BMS student. In previous class, we discussed the concept of Masanumashika in Garbha Sharira. Today, we are going to discuss about the one more interesting topic. That is the role of Panchamahabhuta in Garbha formation. अभी देखो गर्भ है मीन्स गर्भ डेवलप हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसके ऊपर पंच महाभूत का क्या असर पड़ेगा, क्या करेगा पंच महाभूत, क्या करता है गर्भ वृद्धि में, वो पढ़ेंगे हम आज. ओके, इट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक. इंट्रोडक्शन. गर्भ अटेन्स 5 पंच महाभूत एंड आत्मा. 5 पंच महाभूत एंड आत्मा कंबाइन होकर क्या बनता है, गर्भ बनता है. ओके, each mahabhuta have their own role in garbha formation. Each mahabhuta, prithvi apa teja vayu akasha, individual mahabhuta have their own role in garbha formation, they are akasha, vayu, teja, apa and prithvi. These are 5 pancha mahabhutas. पहले देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ आकाश महाभूत क्या करता है गर्भ फॉर्मेशन में. अंतरिक्षास्तु शब्दः शब्देन्द्रियं सर्वचिद्र समूहो विविक्तता च. दिस श्लोक अकॉर्डिंग टू द आचार्य चरक. ओके, contribution of the akasha mahabhuta gives contribution of the, it is responsible for shabda means sound, and shabdendriya sound faculty, and here also it is responsible for sarva chidra samuho. Here chidra word refers to the 4 lumens openings in the body, where there is a cavity or empty space in the body, it is created by the akasha mahabhuta. Anything, any opening, any empty space, any cavity, any pore, that is created by akasha mahabhuta only. Okay, अंतरिक्षास्तु शब्दः शब्देन्द्रियं सर्वचिद्र समूहो and viviktata cha. Viviktata, this word refers to the differentiation of the all the parts of the body. It is done by the akasha mahabhuta. Okay, this is about contribution of the akasha mahabhuta. Antarikshasthu shabdah shabdendriyam sarvachidra samuho viviktata cha. Okay, now by वायु महाभूत, वायु क्या क्या करता है, वायव्यास्तु स्पर्शः स्पर्शनेन्द्रियम, सर्वचेष्ट समूहः सर्व शरीर स्पंदनम लघुता च. दिस श्लोक says that vayu mahabhuta, it is responsible for touch and touch faculty, okay, it is responsible for the sensation of touch, and it is responsible for formation of the ear. means साउंड सुनना है तो वो किससे पॉसिबल है, वायु से पॉसिबल है. ओके, एंड सर्वचेष्ट समूह, चेष्ट मीन्स द वर्ड चेष्ट refers to the movement, right? Chest refers to the movement. Here they are saying that sarva chesta samuha, all the movements in the body, they are responsible by the vayu mahabhuta. All physical movements occurs in our body, it is done by the vayu mahabhuta. Okay, and sarva sharira spandanam, all involuntary movements as well as all physical movements are the contribution of the vayu mahabhuta. तुम्हारा बॉडी में कुछ भी मूवमेंट हो जाए, पेरिस्टालटिक मूवमेंट,
और ब्लड सर्कुलेशन कुछ भी मूवमेंट हो वो किससे पॉसिबल है, वायु महाभूत का कंट्रीब्यूशन है. ओके and at the last laguta cha and lightness in the body, lightness in the body, it is created only by the vayu mahabhuta. This is about the contribution by the vayu mahabhuta. Okay, now we discuss contribution by the agni mahabhuta, contribution by the agni mahabhuta. Repeat this shloka once again. Vayu ka वायव्यास्तु स्पर्शः स्पर्शनेन्द्रियं सर्वचेष्ट समूहः सर्वशरीर स्पंदनम लघुता च. दिस इज अबाउट वायु. नाउ वी डिस्कस कंट्रीब्यूशन ऑफ द अग्नि. अग्नि क्या करता है हमारे बॉडी में, देखो. तैजसास्तु रूपम रूपेन्द्रियम वर्णः संतापो ब्राजिष्णुता पक्तिरमर्ष्य स्नक्षणम शौर्यम च. दिस श्लोका सेज दैट Agni Mahabhuta in our body, it is responsible for Rupa, vision and vision faculty, and Varna, complexion of the body, color and complexion of the body. It is contributed by Agni Mahabhuta. Varna has Santapo, sweating, and Brajishnuta means complexion of the body, and the heat is produced by the Agni Mahabhuta. Pakti Ramarshastaikshnam. Pakti means digestion of the food in our body. Digestion of the food in our body, it is only done by the Jata Ragni. Okay. And Amarsha means arrogance. It is also created only by the Agni Mahabhuta. And Staikshnam Shauryam cha, sharpness in our body, it is also contributed by Agni Mahabhuta. And Shaurya, bravery. अरे आदमी बहुत स्ट्रांग है यार, ब्रेव है, वो किससे होता है, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द अग्नि महाभूत. ओके, रिमेंबर. अरे रटना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट याद रख लो, रटना नहीं चाहिए. ओके, नाउ we move on towards fourth महाभूता, that is contribution of the जल. जल से क्या होता है, जल से क्या होता है, देखो. आप्यास्तु रसम रसनेन्द्रियम सर्वद्रव समूहो गुरुता शैत्यम स्नेहो रेतश्च. This shloka says that when there is a dominant of the up mahabhuta, when there is dominant of the up mahabhuta, that is called as apya or jaliya mahabhuta. Okay, it is responsible for rasam and rasanendriyam. Rasam means taste perception, and perception of the taste faculty, it is responsible by the Jala Mahabhuta. And Sarvadrava Samuho, all liquid parts present in our body. Liquid form में क्या क्या है, रक्त है, रस है और मूत्र है. ये सब किससे बनता है, अप महाभूत और जल महाभूत से बनता है. ओके, एंड heaviness of the body, heaviness of the means अरे सदृढ़ और स्ट्रॉन्ग बनाता है कौन, जल महाभूत. शैत्यम स्नेहो रेश्च. शैत्यम मीन्स कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, इट इज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय द अप महाभूत. एंड स्नेह, ऑयलीनेस ऑफ द स्किन. हमारे स्किन पे ऑयलीनेस होता है ना, वो किससे होता है, जल महाभूत से होता है. एंड रेतश्च, द स्पर्म प्रोडक्शन, इट इज आल्सो डन बाय द जल महाभूत. ओके, दीज आर contributions by the Jala Mahabhuta. Okay, याद रख लो. And contribution by the पृथ्वी महाभूत. पृथ्वी महाभूत क्या क्या करता है यार, देखो. पार्थिवास्तु गंधो गंधेन्द्रियम सर्वमूर्त समूहो गुरुता चेति. पार्थिवास्तु गंधो गंधेन्द्रियम सर्वमूर्त समूहो गुरुता चेति. Smell, the sensation of the smell and smell faculty, it is contributed by the Prithvi Mahabhuta. And Sarva Murta Samuho, here the word Murta refers to the compactness and dimension to the body. Compactness and body compact बनना है तो, एक perfect dimension में होना है तो वहां किसका जरूरत पड़ेगा, पृथ्वी महाभूत का क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा. ओके,
सर्वमूर्त समूहो गुरुता छेति. Compactness and dimension of the body, it is contributed by the Parthiva Mahabhuta or Prithvi Mahabhuta. देखो, this is about the role of Pancha Mahabhuta in Garbha formation. Okay, now we discuss role of Tridosha in our body. देखो, शुक्रार्तव जन्मादो विषणेव विषक्रिमे तैश्च तिस्र प्रकृतयो हीन मध्योत्तमाः पृथक्. At the time of birth, at the time of the birth, which dosha is predominant, based on that the prakriti of the person is decided. देखो, वात डोमिनेंट हुआ तो वात प्रकृति, पित्त डोमिनेंट हुआ तो पित्त प्रकृति, कफ डोमिनेंट हुआ तो कफ प्रकृति. ओके, दिस इज during the birth. Okay, during the birth, at the time of fertilization or the birth, the prakriti of the person is determined based on predominant dosha. Okay, कितना प्रकृति कितना है? 7 प्रकृतिज आर मेंशनड. ओके, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति एंड द्विदोषज. वात पित्त, पित्त कफ एंड वात कफ द्विदोषज प्रकृति एंड सम प्रकृति. among this vata is hina prakriti, pitta is madhyama prakriti, kapha is uttama prakriti, sama prakriti is the श्रेष्ठ प्रकृति. कंफ्यूज मत हो जाना, सब प्रकृति में कौन सा श्रेष्ठ है? सम प्रकृति श्रेष्ठ है. उत्तम कौन है? कप है. एंड द्विदोषजा प्रकृतिज आर नॉन अप्रिशिएबल. This is all about the role of Panchamahabhuta and the role of dosha in Garbha formation. Okay, if you have any doubts, comment below. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो. तुम्हारा फ्रेंड्स के साथ और तुम्हारे जूनियर्स के साथ भी शेयर करो. For handwritten notes, join my Telegram, link in my description. Thank you.